Hello everyone, myself Dr. Roma Ghai, Associate Professor from Kite School of Pharmacy, Kite Group of Institutions, Ghaziabad, would like to take up my presentation on communication in pharmacovigilance. Now this communication in pharmacovigilance is my lecture 24 of the subject pharmacovigilance BP 805 ET. So let's start. Now first of all, what is the definition of effective communication? What is the aim, purpose of effective communication? What are the principles of effective communication? Then what is the introduction to pharmacovigilance? Features of good communication, channels of communication. So why do we need communication pharmacovigilance? Because we know pharmacovigilance is actually detection, monitoring and prevention of the adverse drug reaction. So we want that the drug should be safer from the public point of view. ड्रग सेफ होनी चाहिए, ड्रग्स इफेक्टिव होनी चाहिए, तो इसीलिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. सो कम्युनिकेशन विल इंश्योर गुड पब्लिक हेल्थ. It will ensure drug safety. So let's start with the definition. What is effective communication? When we say effective communication, what do we mean actually? Effective communication is the message which has been sent with evidence that it has been received, understood and has prompted appropriate change or action. So automatically एक ये मैसेज है, कम्युनिकेशन क्या है? क्लियर मैसेज है जो कि दूसरी पार्टी रिसीव करनी चाहिए और वो एक्नॉलेज करती है कि हाँ मुझे ये समझ आ गया है, अंडरस्टूड है. And this should prompt change or action and based on that a feedback is taken. और अगर feedback में पता चले कि ये action ठीक नहीं है तो दोबारा से हमें communicate करना पड़ता है. So this is a very important cycle of effective communication. What is the aim of communication? We want to promote the knowledge. We want to give good practices. We should adopt good practices. We want to educate the professionals. We want to educate the public. The aim of communication is to engage and motivate all parties like HCPs. Who are HCPs? Health care practitioners who take care of our health. Communication helps in providing information about the risk. Risk of what? Risk of the drugs which are being taken by the public, by a person. Now communication can influence prescribing. If suppose I am the regulatory authority and I want to convince my doctors that this drug is not safer, then if I have to influence prescribing, then I have to motivate the doctor through communication. Then communication can influence policy decision. So ultimately, what is the aim of communication pharmacovigilance? That is protecting the patients from harm. What are the principles of effective communication? Be clear about your message and purpose. What do you want to say? What do you want to tell about a particular drug? Know your audience. We have to know your audience, whether our audience is a healthcare professionals or it is public, it is a patient, it is a regulatory body. So we have to know our audience. Empathy. Empathy is very important. Empathy means understanding the other person. इस तरीके से बताएं कि दूसरा person समझ सके. So we have to tailor the message accordingly. Choose appropriate method of media. Present message with impact. Make benefits clear. So what are the benefits? Make benefits clear. For example, अगर मैं एक डॉक्टर को कन्विंस करना चाहती हूँ कि ये मेडिसिन के अगर हम डोज को थोड़ा सा कम करते हैं तो उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं और एडवर्स इफेक्ट्स कम हैं, तो अगर हम इस तरीके से बताते हैं तो कम्युनिकेशन ही हमें हेल्प कर सकता है टू मेक द बेनिफिट्स क्लियर. देन प्री टेस्ट द मैसेज एंड रिवाइज द मैसेज एंड देन रिपीट द मैसेज. देन व्हाटएवर मैसेज इज गिवन थ्रू कम्युनिकेट टू द अदर पार्टी, we have to seek feedback, we have to monitor the effects and we have to start it again if we do not get the desired effects. So as I told you, it's communication pharmacovigilance. So pharmacovigilance, you should know that it's a branch of science dealing with the activities related to detection, evaluation, control and prevention of adverse drug reaction, its related problem. तो हमारे यहाँ communication क्यों important? Communication इसलिए important है. The main concern of pharmacovigilance is assessment of risk versus benefit drug profile. That means we have to assess drug safety. So communication से ही हम drug safety को ensure कर सकते हैं. So that is drug safety to use various drugs in patients suffering from several ailments.
Who are the partners in audience and drug safety? So manufacturers who are manufacturing the drug, regulators who are keeping an eye on the manufacturers, politicians, employees, health professionals, academics, bosses, managers. Public is directly influenced क्योंकि public ही medicine लेती है. Patients who are suffering from various diseases. So consumer, lawyers, media, international community. What is a good communication? अगर मैं कोई चीज़ समझाना चाह रही हूँ तो वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए ताकि मेरे स्टूडेंट समझ सके. तो वैसे ही फार्माकोविजिलेंस में गुड कम्युनिकेशन क्या है? द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर. सो मैसेज शुड बी वेरी क्लियर वट एवर वी वॉन्ट टू टेल. इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय द ऑडियंस. इफ द ऑडियंस इज डॉक्टर तो डॉक्टर समझ सके. अगर द ऑडियंस इज पब्लिक तो पब्लिक शुड अंडरस्टैंड. इट शुड प्रोवोक अ चेंज. It should be accessible, timely. It should provide benefits. It should hold attention and should be relevant and informative to the audience. अब डॉक्टर्स अलग हैं, नर्सेज अलग हैं, तो हमें मैसेज को टेलर मेड करना पड़ता है. पेशेंट्स अलग हैं, फार्मासिस्ट अलग है, अलग अलग ऑडियंस है हमारे पास जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ ड्रग्स. द एज इज डिफरेंट. The gender is different, education is different, the ability is different. Some doctors are very highly intellectual and some doctors are not able to understand what we want to tell about the adverse effects, right? Then similarly with the public, some public are literate, they understand us easily, they understand, and some are not able to understand. See, then people difference. People differ by intelligence. People differ by role, job, location, lifestyle, their income, debt, attitudes, values. So people are different. So we need to have a good communication. Okay? While communicating to general public, we have to see what is the percentage of population at or below basic literacy level who are not able to, they know just the layman language. उनको adverse effect word समझ नहीं आएगा. उनको कुछ और तरीके से समझाना होगा. Percentage of population with poor health literacy, जिसकी poor health literacy है, वो भी जल्दी poor health as well as literacy. I'm sorry for this. Right? So बेसिकली हमें उनको समझाना है तो हमें ये सब कंसिडर करना पड़ेगा. सो हार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज एक्चुअली व्हाट? अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड देन टेलरिंग मैसेज प्रिसाइसली टू देम. बिल्कुल जैसे एक टेलर हर एक इंडिविजुअल का क्लोथ्स को अलग नाप लेकर साइज लेकर वो बनाता है, उसी तरह से गुड कम्युनिकेशन तभी है अगर वो मैसेज टेलर मेड हो सके, जो पर्सन को समझ आ सके. So what are flaws in drug safety communication? Because pharmacovigilance deal with what? Drug safety communication. So flaws at all levels of society can lead to mistrust, misinformation and misguided action. अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो ultimately क्या होगा? It will result in harm with the drug. It can create a climate where drug safety data may be hidden, withheld or ignored. अब effective communication. अब actual में वो slide आई है जो मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी कि डॉक्टर्स को क्या कम्युनिकेट करना है, फार्मासिस्ट को क्या करना है, रेगुलेटरी का क्या काम बनता है. सो अल्टीमेटली दीज आर द पर्सन्स, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज द स्ट्रक्चर. सो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे शुड कम्युनिकेट द रिपोर्टेड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इवेंट्स. ये अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? ये रिपोर्ट कर रहे हैं आपके फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसको जो हम PVPI बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. इंडिया का अगर लें, ऐसे यूएस में कहाँ कर रहे हैं? FDA, US FDA. तो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट हैव टू रिपोर्ट, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड. अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, अगर फार्मासिस्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा वी विल नॉट बी एबल टू गेट वेदर द ड्रग इज सेफ और नॉट. ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, दे ऑल्सो नीड टू रिपोर्ट इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स. What are clinical pharmacists, medical specialists? इनको कैसे क्या कम्युनिकेट करना है? इनको कम्युनिकेट करना है कि इनको डाटा कलेक्ट करना है और डाटा का एनालिसिस करना है, राइट? सिमिलरली फार्माकोविजिलेंस सेंटर सेफ्टी ड्रग एडवाइजरी कमिटी, दिस ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा. रेगुलेटरी इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स, अब जो डाटा मिल गया रेगुलेटरी को थ्रू कम्युनिकेशन, इनको क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट, वार्निंग, प्रोडक्ट रिकॉल. प्रोडक्ट रिकॉल किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे इंडस्ट्रीज को. You have to take the product back out from the market. या वार्निंग देंगे या रिस्क मैनेजमेंट. तो यहाँ भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली रेगुलेटरी अथॉरिटी, हेल्थ इंडस्ट्री सर्विसेज, दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग. So ultimately, what is our goal of communication? That is to prevent medicine-related problems, to reduce morbidity and mortality of the people.
So effective communication enables systemic and reliable flow of information which travels from patient to healthcare professional. देखो पेशेंट तो अपनी तरीके से जैसे भी बताएगा अपनी लिटरेसी के हिसाब से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ठीक है. देन बट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ओके, द इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू pharmaceutical companies or directly to the PVPI, and ultimately it goes to the health authorities, regulatory authorities. Reporting of adverse drug reactions which can help in establishment of benefit risk profile of a drug. This has been made only very visible with effective communication. So effective communication की वजह से डॉक्टर्स ढंग से सही तरीके से रिपोर्ट करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को, और इससे हमको एक्चुअली बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग मिलती है. So communication can help in improving patient care, which I have told you in the starting. It can help in disease management. It can promote transparency. It can promote accountability of pharma companies towards the patient. So UPSA मॉनिटरिंग कमेटी, जो मैंने आपको एक वीडियो बताई थी WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग की, अगर आप देख चुके हैं तो UMC is working for world's public health, not for country public health, for world's public health. So for better healthcare facilities globally they are working. So the real role of communication is helping in raising awareness regarding the importance of pharmacovigilance, which in turn can help in better reporting of the adverse drug reactions. So this can achieved, again communication अब कैसे हो रहा है, UMC और national agencies में हो रहा है. So this can be achieved by proper training sessions. This can be achieved by properly giving lectures, social science based research, which can help in providing a better and effective platform for ADR reporting and better flow of information from consumers, patients to healthcare authorities. So effective communication is a core of successful vigilance, right? The purpose of interactions, we come to know the interaction from the healthcare people. Okay, the purpose of interactions among healthcare professionals, patients, regulators, pharmacovigilance experts. This is used to manage risks with the medicine and prevent patient harm. तो आपस में ये लोग इंटरैक्ट करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कभी-कभी ड्रग इंटरैक्शंस भी हो जाती है तो आपस में डिस्कस करते हैं, एंड देन दिस इज ओनली, तो ये कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं मैसेज. Now, why is it urgent? Why do we need effective communication pharmacovigilance? Because the ADRs are life-threatening. They can lead to deaths. They are leading cause of morbidity, mortality. Morbidity क्या है? Disability, disable हो जाना. Mortality, deaths. So lack of information. So communication से ही तो हमको information मिल रहा है. So lack of information lack of information as well as lack of communication will be now a challenge for pharmacovigilance professionals. So pharmacovigilance essentially it's a risk management process for medicines. Now drug safety information must serve the health of the public. This is very important. Such information must be ethically, effectively communicated in terms of both content and method. जो facts आ रहे हैं कि कितने लोगों को एक particular medicine से adverse effects आ रहे हैं, problems आ रही हैं, तो ये facts हैं. Hypothesis, conclusion should be distinguished clearly. Uncertainty should be acknowledged कि ये क्या वाकई हो सकती है ड्रग की वजह से या नहीं हो सकती. And information should be provided in ways that meet both general needs as well as the individual needs. So we have to educate in the appropriate use of drugs. So in fact, pharmacists and all pharmacologists, they do this work that they keep on educating the healthcare professionals, right, in appropriate use of drugs, including the interpretation of safety information, because after all, these healthcare practitioners are going to prescribe the drugs for the patients. Okay, so this education is essential for the public at large, as well as for patients, as well as healthcare providers. So the active, timely, effective communication. See, the communication must be proper, active, timely, effective. So it plays a role in issuance of updates on guidelines on drug safety. So sometimes we have to go for updates on these drug safety guidelines को हमें update करना पड़ता है, ठीक है? तो ये communication ही help करता है, right? As per the pharmacovigilance experts present in all around the world. So it helps in creation of safety guidelines कि कौन सी drug कैसे लेनी है, किस में नहीं देनी है, elderly को देनी है, नहीं देनी है, liver problem हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये सब effective communication होती है. Every country needs a system with independent expertise to ensure that safety information on all available drugs is adequately collected, impartially evaluated and made accessible to
all. So every country needs a system. So exchange of data, again exchange of data means what? Communication. So exchange of data in evaluation among countries must be encouraged and supported if we want good public health. So communication is a vital stage in pharmacovigilance process. So main requirements for drug safety communication, it should be accurate, it should be balanced, it should be open, it should be understandable, it should be targeted. So we have accurate, say hame this we got A, from balanced we get B, then open we get O, from understandable we get U, and targeted we get T. So about is a mnemonic for understanding this vital stage. Accurate means what? कि जो चीज़ हम ड्रग सेफ्टी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आर वी गिविंग द राइट फैक्ट्स, आर वी गिविंग द राइट नंबर्स, इज ऑल दैट इंफॉर्मेशन विद द रीडर नीड्स टू नो इंक्लूडेड, या और भी इंफॉर्मेशन है. सो दैट इज एक्यूरेट, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट. बैलेंस्ड, क्या एक ड्रग की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहे कि ये ड्रग बेसिकली एल्डरली के लिए हार्मफुल है, तो क्या हमने उसके रिस्क देखे, क्या हमने उसके बेनिफिट्स देखे, क्या वो बेनिफिशियल है भी एल्डरली में या नहीं. इज द ओवरऑल मैसेज राइट, सो इट शुड बी बैलेंस्ड. ओपन, इज द कम्युनिकेशन ऑनेस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर हैजार्ड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू हाइड इट और मिनिमाइज इट. क्या कोई पर्टिकुलर एडीआर आया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है जो रिपोर्टेड हुआ है, तो क्या ये कम्युनिकेशन ऑनेस्ट है, कुछ हाइड तो नहीं किया गया, कुछ मिनिमाइज तो नहीं किया. अंडरस्टैंडेबल शुड बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज पॉसिबल. क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है? The reader is more likely to respond appropriately if the message is simple and clear. So understandable means that the message should be very simple and it should be in clear language. Targeted, हम किसको ये information दे रहे हैं? This involves considering who is the intended audience and to whom we are giving this specific information. So communication intended should be in plain language reviewed by lay people. अगर हमें patient के लिए information देनी है तो हम क्या करेंगे, हम स्पेशली एड्स रखेंगे, उसको प्लेन लैंग्वेज में रखेंगे, एंड इट शुड बी रिव्यूड बाय ले पीपल. इन मल्टीकल्चरल एंड यू नो दैट in country there are different type of cultures are there, different languages are there. तो अगर जैसे मैं जो पर्सन को तेलुगु में समझ आता है तो उसको तेलुगु में ही समझाना है, तमिल में समझ आता है तमिल में ही समझाना है. सो इन मल्टी कल्चर एंड डाइवर्स वर्ल्ड मार्केट प्लेस, मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन appropriate language is a growing challenge for pharmacovigilance people. It's particularly important any information about drug safety to ensure essential information must be clearly conveyed. Essential information not be obscured. Obscured means hide. किसी तरह की hidden नहीं होनी चाहिए. Key facts and recommendation must be worded unambiguously. Unambiguously it should be clear and should be placed in a prominent early position with use of highlight. उसको highlighting करना चाहिए key facts and recommendations को. It's vital that level of risk is made very clear कि क्या ये ड्रग ज़्यादा रिस्की है, कम रिस्की है, तो ये कम्युनिकेशन में ही कम्युनिकेटर्स को ही पता होना चाहिए. So level of risk must be made very clear by expressing it in absolute terms or relative terms. So following represents this is a basic model for any drug safety communication, whether it should be how it should be targeted at healthcare professionals. तो अगर हम healthcare professionals पे कर रहे हैं या lay audience पे कर रहे हैं तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले बताना नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कौन सी ड्रग थी जिससे एडवर्स रिएक्शन हुआ, हैजार्ड, जब एक एडीआर डिटेक्ट हुआ तो क्या एक्चुअल हुआ, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं थे, समरी ऑफ द एविडेंस फॉर द हैजार्ड, क्या लैब टेस्ट किए गए, व्हाट इज बीइंग डन, क्या उस एडीआर को रिव्यू करा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, न्यू स्टडीज करी गई, क्या उस ड्रग की लेबलिंग चेंज कर दी गई, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट्स. सो क्या होगा अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसी ड्रग को प्रिस्क्राइब करते रहेंगे तो क्या हो सकता है, पेशेंट्स के ऊपर क्या असर हो सकता है. ओवरऑल बैलेंस व्यू ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स and where to get further information and contact details. So such type is a basic model for drug safety information. So different channels of communication are there. It can be face to face, right, through personal email, broadcast email, web pages, formal presentation, workshops, paper and posters, and use of social media. So ultimately I want to conclude this, that the safer use of medicines depends on everyone's constant awareness and vigilance. If we are vigilant, if we are aware, automatically we will communicate a good clear message. So, and automatically we can ensure safer use of medicines, right.
So, strong communication practice is an important part of that process. A reliable flow of relevant information. It allows people to stay informed about the benefits and risk of medicines. तो अगर हम इंफॉर्मेशन सही तरीके से अपनी जनरल पब्लिक को देंगे या हल्के डॉक्टर्स को देंगे जो ठीक तरीके से प्रिस्क्राइबिंग करेंगे पेशेंट्स को, तो उससे दिस विल इंश्योर योर जनरल पब्लिक हेल्थ. Then there is very important that all areas should be reported, right? It should be communicated properly, and there should be their role of dialogue between patient and physician is very important, because अगर patient ही hide करेगा, doctors को नहीं बताएगा, communicate नहीं करेगा, तो doctors को properly समझ नहीं आएगा कि क्या patient के साथ problems हुई हैं एक particular drug के साथ. So basically, everyone, I just want to say that these are the references. You can go through this YouTube. And it's a very effective communication pharmacovigilance by Bruce Hugman. When I saw this video, I got really influenced. I really came to know what is actually effective communication. It should be a clear message which the other person should be able to receive and understand, and then produce some action. Then only then it is a communication is effective. And the other book is Patrick Waller. So thank you all. I hope you have understood what is effective communication in pharmacovigilance. Thank you all.